If we continue previous session वाली story, wherein you and your friends were partner and third friend की entry हो रही थी. थर्ड फ्रेंड की एंट्री से पहले जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते थे, समझो कि वो आप 50-50 शेयर करते थे. अभी जब थर्ड फ्रेंड बिजनेस में एंटर होगा, उसको कुछ तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा. आप दोनों में से कौन उसको शेयर देगा, कितना देगा, कैसे देगा? There are all confusing questions that you need to answer. Every time जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, वो कुछ ना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट से एडमिट होता है, बट हर बार उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होते हैं. एंड सो हर बार डिफरेंट अप्रोचेस से वी नीड टू कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. In today's session, we will be discussing two such cases, two such approaches to calculate new and sacrificing ratio. Hello everyone and welcome back to the commerce element. Let's quickly start with the first approach or the first case. For example, it is said that A and B are partners with 3:2's P&L ratio. C is admitted with 1/4 share. Only this much information is given and you are supposed to calculate new as well as sacrificing ratio. Now let's try to crack how we will be calculating both of them. First of all, जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है, जो भी शेयर डिमांड कर रहा है, उसको वो शेयर दे दो. So we will start with, if the profit share demanded by new partner is in form of proportion, assume that आपके फर्म का प्रॉफिट 1 रुपी है. सो लेट प्रॉफिट बी 1. नाउ 1 में से 1/4 शेयर न्यू पार्टनर को दे दो. यू विल बी लेफ्ट बैक विथ 3/4 शेयर. दिस 3/4 शेयर न्यू पार्टनर को देने के बाद जो बचा, ऑब्वियसली वो किसका बचा होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है. In our case, A and B. So this is known as combined share of A and B in new firm. अब ये जो भी बचा कुचा 3/4 है, वो A and B किस तरह से लेके जाएंगे वो हमको नहीं बोला. बिकॉज हमको नहीं बोला, हम अज्यूम करेंगे कि वो बचा कुचा शेयर उनके P&L रेशियो में लेके जाएंगे. So here we will be able to calculate new ratio based on that. A जो भी बचा कुचा 3/4 है उसका, because their ratio was 3:2, उसका 3/5. 3/5 कैसे आया? 3 तो उसका शेयर है. Remember that 3 अकेला कभी भी नहीं होगा. It is 3 + 2, 3/5. So denominator will be 5. And what about B? जो बचा कुचा 3/4 शेयर है उसका 2/5. 2/5 बी लेके जाएगा. रिमेंबर दैट न्यू रेशियो ऑलवेज विल बी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर एज वेल, हु इज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर. सो ही इज गेटिंग एडमिटेड विथ 1/4 शेयर. सो यू विल हैव 3 3s are 9 upon 20. 3 2s are 6 upon 20. And you cannot have ratio until and unless the denominators are equal. And so आपको 4 को 20 करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. And you will have 5/20. So A, B and C का न्यू रेशियो होगा 9:6:5. Now we will calculate sacrificing ratio. Sacrificing ratio will be calculated old share minus new share के formula से. Remember, this is O for old share, N for new share. Many times you have MCQ from this. What is the formula for sacrificing ratio? It is old share minus new share. So let's try to find A's sacrifice. A का old share क्या था? 3/5 minus new share, it is 9/20. B का ओल्ड शेयर क्या था?
it was 2/5 minus his new share is 6/20. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज एग्जिस्टिंग पार्टनर का होगा, न्यू पार्टनर का नहीं होगा. आते ही कोई बंदा थोड़ी ना सैक्रिफाइस करेगा. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी फॉर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ओनली. Now you might be knowing basic mathematical rule that you cannot subtract until and unless the denominators are equal. So 5 को 20 करने के लिए हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन यहाँ ऑल्सो 5 को 20 करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई. सो 3 into 4 12 minus 9 upon 20 and 4 2s are 8 minus 6 upon 20. You are having 3/20 and 2/20. So their sacrificing ratio is 3:2. Now what the case was trying to say that if relative ratios between old partners do not change, उनके existing ratio 3:2 थे, उनका न्यू रेशियो एज सच देखो तो 9:6 इज नथिंग बट 3:2 ओनली. उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल्सो टर्न्ड अप टू बी 3:2 ओनली. So remember that if in case only this much information is given, that so and so partners are having so and so P&L share and the partner is admitted with this much share. If only this much information is given, old ratio, new ratio and sacrificing ratio all will remain unchanged. They will remain same only. So I hope this case is very much clear to you. Moving on to the second case or second approach. If relative ratios between old partners do change, यहाँ पे it was they do not change. उनका जो भी existing ratio था वही उनका new ratio भी हुआ, वही उनका sacrificing ratio भी हुआ. Here the case will not be same. उनके relative ratios change होंगे. Let's see what kind of information is given. It is say that X and Y are partners with 5:3. They decided to admit Z for 1/4 share. इतनी information हमको first case में भी दी थी. But apart from only this much information, it is said that and they agreed to share between them in 2:1 in future. अब यहाँ पे ये 2:1 कुछ new added information है. So let's see how it makes difference in calculation. First of all, when we try to crack it, because new partner is demanding his share in proportion, we will assume that profit is 1. So let the profit be 1 में से न्यू पार्टनर को अपना शेयर दे दो. So if we give 1 minus 1/4, we will be left back with 3/4 as in the previous case also. ये 3/4 किसका? Existing partner X and Y का शेयर हुआ in the new firm. So we will call it as combined share of X and Y in new firm. इसके basis पे we will be able to calculate their new ratio. Now in previous case ये 3/4 बचा कुचा शेयर पार्टनर्स कैसे लेके जाएंगे? That was not discussed. So we assume that बचा कुचा 3/4 they will get in their old ratio. But in this case it is said that they agreed to share between them in 2:1 in future. अब ये 3/4 बचा कुचा शेयर फ्यूचर में X and Y 2:1 के शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसा बोला है. सो while calculating new ratio, X का न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो बचा कुचा 3/4 शेयर है उसका 2/3 X लेके जाएगा. 2/3 कहाँ से आया? यहाँ से. X का शेयर 2 rupees out of 2 + 1 3. So it is 2/3. How about Y?
जो बचा कुचा 3/4 शेयर है उसका 1/3 y लेके जाएगा. एंड रिमेंबर दैट न्यू रेशियो ऑलवेज विल बी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर हु इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर. So if we cut this out, you will be left back with 2/4. You will be left back with 1/4 and 1/4. So their new ratio will be 2:1:1. Anyways, x and y का 2:1 फ्यूचर में शेयर होगा. That was given. तो फिर हमने ये क्यों कैलकुलेट किया? बिकॉज वो तो 2:1 रेशियो दिया था. हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने के लिए उनके न्यू शेयर्स चाहिए, न्यू रेशियो नहीं. एंड दैट इज व्हाई वी कैलकुलेटेड न्यू रेशियो सो दैट हमको उनके न्यू शेयर्स मिले. सो नाउ इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, हमको यहाँ पे n फॉर न्यू शेयर चाहिए जबकि ये न्यू रेशियो दिया था. And we are concerned with new share, and that is why we calculated this. Now if we try to find x का sacrifice, उसका old share था based on this 5/5 plus 3 8 minus उसका new share is 2/4. If we try to calculate y's sacrificing ratio, उसका old share था 3/5 plus 3 8 minus उसका न्यू शेयर इज 1/4. सो माइनस 1/4. रिमेंबर दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो खाली एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का होगा, न्यू पार्टनर का नहीं. नाउ टू सबट्रैक्ट दिस यू नीड टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स. 4 को 8 करने के लिए ऊपर नीचे यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2. Here also ऊपर नीचे multiply with 2. So you will be left back with 5 minus 4/8 and 3 minus 2/8. This will be 1/8. This also 1/8. So their sacrificing ratio will be 1:1. And thus here the relative ratios between partners do change. उनका existing या old ratio था 5:3, उनका new ratio आया 2:1, उनका sacrificing ratio आया 1:1. Unlike this one wherein existing, new and sacrificing remained same. So every time whenever the partner gets admitted, वो different conditions से admit होता है, and thus you will have to calculate new and sacrificing ratio under different conditions. In today's session, we tried to solve 2 such approaches. In the upcoming session, we will be going on with 2 more approaches. So until then, stay tuned and goodbye.